Good morning, students, and welcome to your science online class. This is part 4 of chapter 12, Reproduction in Plants. And today we will discuss another important topic of this chapter. Students, as we have discussed about sexual and asexual reproduction. But the question is how male gametes reach the female gametes in plants. So the answer is this: pollination. As we have discussed in the previous slide that male gametes and female gametes fuse together to form zygote. And here in this picture you can see the formation of zygote from the process of fertilization. And this reaching process of male gametes into female gametes is known as pollination. Students, पॉलन ग्रेन्स की एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है जो उन्हें किसी भी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. एंड व्हेन दे डिस्पर्स देन ड्यू टू देयर लाइट वेट सम एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स कैरिड देम अवे टू डिफरेंट प्लांट्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट वीडियो. एंड ट्रांसफ़र की ये प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा में जाते हैं पॉलिनेशन कहलाती है. नाउ दिस पॉलिनेशन टेक प्लेस इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन और वी कैन कॉल इट ऑटोगैमी. स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस pollen grains land on the stigma of same flower, and this process mostly take place in bisexual flowers because these flowers contains pollen grains as well as stigma. Second one is cross pollination or we can call it allogamy. So in this part pollen grains land on the stigma of other flower, whether of same kind or different. Now students, as I told you in the starting that pollen grains can carried out to stigma by wind, water or insect. Now let's talk about these factors one by one. First is insect pollination. Students, colored and strong smelling flower insect को attract करते हैं और जब insect nectar के लिए flower पर बैठते हैं तो pollen grain को भी transfer करते हैं. एंड इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्चिड, स्वीट पी एंड बटर कैप. नेक्स्ट इज वाटर पॉलिनेशन. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज वेलिस्नेरिया विच इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन. एंड इन दिस वे वाटर itself carry out the pollen grains and land on the female flower gametes. Hydrophily is another important example of water pollination. And last way is wind pollination. Students, कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जैसे कि वीट, मेज एंड राइस जो ना कि नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और ना ही फ्रेग्रेंस. इनकी स्टेगमेंट लॉन्ग होती है जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं. इन पॉलन ग्रेन का वेट बहुत ही लाइट होता है जिसकी वजह से ये विंड में इजीली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं. सो दीज वर द 3 ways ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर. एंड विद दिस टॉपिक वी हैव completed the chapter.